A senior minister in PoK has voiced concern over Islamabad's apathy to provide funds for reconstruction of education and health facilities that were damaged in the deadly 2005 earthquake in the region. A report. Chaudhry Mohammad Rashid, Power Development Minister, Pakistan-occupied Kashmir, has appealed to Islamabad to provide funds for infrastructure projects that have remained stalled even after 19 years post the deadly earthquake in the region. Rashid said there are hundreds of projects that are stalled due to no funding, while more than 1 lakh school students are still forced to study under an open sky. Locals blame that successive governments have only made big claims, but no groundwork has been done to reconstruct and rehabilitate the victims. कि अभी तक जो फेडरल गवर्नमेंट की एक्ट के तहत और उनके कानून के तहत उनकी ज़िम्मेदारी थी इरा एक्ट के तहत कि उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन मुकम्मल करनी है, लेकिन पिछले कई सालों से वो हमें फंड्स मुहैया नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में हमारे बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। हमारे जो अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू ही नहीं हुए, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फौरी तौर पर फंड्स मुहैया किए जाएँ। और उस वक्त हमारे फंड्स जो हैं जो डोनर की तरफ से इरा के पास आए थे 55 बिलियन जो हैं वो दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट किए गए। Residents say a complete overhaul is required, but the government pays no heed to the dilapidated infrastructure. They accuse they have been at the receiving end of the discriminatory policies of Pakistan that have failed to provide even basic facilities to them.